ਖੁੱਲਦਾ ਸਿੰਸਿਨ। तो गाइस आप आ गए थल्ले। Floriana Heritage Trail। टकार मार ला तू पहला। ये किहड़ा ट्री होया यार, ये तो कुछ समझ नहीं आया। So this location just within the Valletta in Malta, and it's just next to the bus stand. If you will come down to the bus stand across the road, then you can see this beautiful garden kind of place, and the view is stunning. Yes. That's our fruits in Malta. You can eat that also. Small यार बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बड़ी पीसफुल जी है। कलर देखो यार फ्लावर से, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स आ। आ रही है ना जापान की फीलिंग। आई थिंक ये लोकेशन शाम च विजिट करने वाली है ना, जैसे फैमिली के नाल या फिर फ्रेंड्स वगैरह नाल आके तुसीं चिल कर सकते हो। सिटिंग एरिया भी है, और सब तो बढ़िया जी गल है कि बिल्कुल फ्री आ, कोई एंट्री फीस नहीं हैगी। प्रॉपर गवर्नमेंट ने इंतजाम किया हुआ इरीगेशन वगैरह का, पूरे पाइप वगैरह है या पानी वगैरह ना प्लांट्स में, तो थां ते सिटिंग एरिया आ। कोई स्कूटी लेके भी आया होया, उधला तो व्यू भी बड़ा ब्रेथ टेकिंग है। आई थिंक शाम च बंद होंदी सी लास्ट टाइम आए थे, तो उदों ये बिल्कुल बंद सी, तो असीं ट्रेस पासिंग करके दरवाजा टप के आए थे। खजूर का दरख्त है इत्थे, फैमिली बैठी हुई है अपने बच्चे नाल। So here you can see the port of Malta. This is kind of abandoned place, and the last time I came it was locked, but this time it was open. So yes guys, just have a look. There's no railing. You can see it's fully open, and from there there's the ferries and you can go to Birgu. Last time Novankar came, Yatri Doctor, we took a boat from here and we went to Birgu, and this is gonna be the port. यहाँ से सारी ships और cruise चलते हैं दूसरी countries के लिए, and ये है main road, और ये है location। यहाँ से बिल्कुल अगर ऊपर जाओगे तो बस स्टैंड है वलेटा का, द मेन टर्मिनल, एंड इधर से आप जा सकते हो, वहाँ से लिफ्ट लेके आप थोड़ा नीचे जा सकते हो डायरेक्ट, और मेन सिटी में एंटर कर जाओगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वे ऑल अक्रॉस द वे, टेक स्टेयर्स एंड गेट डाउन। सो दिस इज़ गोना बी द बेस्ट वे। हूसोएवर इज स्टेइंग हियर, जो माल्टा का रेजिडेंट है जिसके पास तलिनिया कार्ड है, वो फ्री में वो लिफ्ट यूज़ करता है, और दूसरों के लिए जो विजिटर है आई थिंक उनके लिए 150 और 2 यूरो
या समथिंग लाइक दैट। तो दिस गिव थोड़ा रिस्की है ये लोकेशन, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो, बट थोड़ा रिस्क तो लेना चाहिए लाइफ में। View, it's kind of good place when you want to be alone. And if you're having some stress, you can come here and you can like relieve yourself. I don't know about yours. What's all the name of this location and where exactly it is? This is close to Upper Baraka. And then if you want to come here to be easy, you can take the lift also. If you have the bus card, like local, you can just tap it from up or from down. It's free. But if you're tourist, I think you have to pay like 150 euros, 1.50 cents. That's all. So is there any entry fee for this location or this garden? Which one? This garden where we are at the No. moment. It's everything free. What's for this biryani and this? Yes. This Sorry. one. This. I think we are enemy now. ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਲੈਟਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਰਾਕਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਾ ਵਾਲਾ ਫਲਾਵਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ।